ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 111 of the Ayodhya Kandam, which has 32 verses. Pleading the superiority of a teacher in comparison to one's parents, sage Vashishta, by virtue of his superiority and as a concession to Bharata, a dependent of Sri Rama, urges Sri Rama, whose vow it has been to respect the feeling of his dependence, to grant the prayer of Bharata. Sri Rama, however, contends that one's parents are more worthy of respect even than one's teacher, and is accordingly insistent on implementing the pledge already given by him to his father. Thus discomfited in argument, Bharata makes up his mind to undertake a fast unto death as a last resort to exert pressure on him. Sri Rama's dubbing such a step as repugnant to the code of conduct prescribed for a Kshatriya, Bharata requests his elder brother to allow him to remain in exile in the forest as the latter's proxy. Sri Rama, however, rules that this proposition also as something preposterous, saying that one's duty is entrusted to a proxy only on a former's incapacity, which could not be predicated on him, and reaffirms his decision to enter Ayodhya only after fulfilling the pledge given to his father. आज हम एकादश दीक्षतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 32 श्लोक है। वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते ना देख भरत का धरना देने का तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। वशिष्ठः स तथा राममुक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीत् धर्मसंयुक्तं पुनरेव अपरं वचः। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने पूर्वक बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। Having spoken to Sri Rama as aforesaid on that occasion, the said Vashishta, the family priest of the king, addressed to him once more the following words in consonance with righteousness. पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव। रघुनंदन काकुत्स्थ कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। The preceptor, Ocean of Kakusta, as well as one's father and mother, O descendant of Raghu, ever come to be the adored of a man from the time he is born in this world. पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषऋषभ प्राज्ञां दधाति च आचार्यः तस्मात् स गुरुरुच्यते। पुरुष प्रवर पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। The father only procreates and the mother brings forth a human being, O jewel among men. The preceptor, on the other hand, bestows wisdom on him. Hence, he is spoken of as a guru, superior even to the parents. सतेहं पितुः आचार्यः तव चैव परन्तप मम त्वं वचनं कुर्वन् न अतिवर्तेः सतां गतिम्। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पद का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। I, for my part, am the preceptor not only of your father, but yours too, O chastisizer of foes. Doing my bidding, therefore, you will not be transgressing the path of the virtuous. इमाहि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा येषु तात चरन् धर्मं न अतिवर्तेः सतां गतिम्। तात ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा संत मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा।
Here indeed are your subjects, kinsmen, and tributary princes too. Discharging your duty by them, you will not be transgressing the path of the virtuous. वृद्धया धर्मशीलाया मातुः न अर्हस्य वर्तितुम् अस्याहि वचनं कुर्वन् न अतिवर्तेः सतां गतिम्। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। You ought not to fail in your duty towards your aged mother, who is given to piety. Doing her bidding, you will certainly not be transgressing the path of the virtuous. भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं न अतिवर्तेः त्वं सत्यधर्म पराक्रम। सत्य धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्म स्वरूप अब तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। Granting the prayer of Bharata, who is supplicating you, you will not be overstepping your bounds, O Scion of Raghu, who are ever united with truthfulness, piety, and valor. एवं मधुरमुक्तः स गुरुना राघवः स्वयं प्रति उवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषऋषभः। गुरु वशिष्ठ ने समुद्धर वचनों से जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को तो उत्तर दिया। Instructed thus in sweet words by his preceptor himself, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, a jewel among men, replied as follows to Vashishta, who was sitting at ease there. यन् माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथा शक्तिप्रदानेन स्वापनोच्चदानेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्वक बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। The service that parents render to their son by giving him whatever they can, as well as by putting him to bed and rubbing his body with oil, etc., nay, by speaking kindly to him every moment, and even so by nourishing him, nay, whatever good is done by them cannot be easily requited. सही राजा दशरथः पिता जनयिता मम आज्ञापयन् मां यत् तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। Indeed, that which the celebrated King Dasharatha, my father, who brought me into being, has asked me to do, shall not prove to be untrue. एवं मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रक्कः सूतं परमदुर्मनाः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, When Sri Rama had spoken thus, Bharata, for his part, who was distinguished by a broad chest and felt extremely sad at heart, commanded as follows Sumantra, the charioteer, who stood nearest to him. इह तु स्तण्डिले शीघ्रं कृशाणास्तर सारथे आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति। Speedily spread for your part blades of kusha grass on this piece of level ground, O charioteer. I shall sit at the door of my elder brother in order to exert pressure on him until he gets fully propitiated and grants my request. निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्तात् शालायां यावन् मां प्रतियास्यति।
Like a destitute Brahmana who has been deprived of his fortune by a debtor failing to repay the debt as stipulated, I shall remain lying down in front of Sri Rama's hut without food or drink and depriving myself of light by covering my face until he returns to Ayodhya as a concession to me. सार्थ है, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुशा बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यही इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। सतु रामम् अवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरम् उपस्थाप्य भूमौ एव आस्थितः स्वयं। ये सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। Perceiving Sumantra awaiting the pleasure of Sri Rama, Bharata for his part sat down disconsolate on the ground, spreading a mat of kusha grass with his own hands. तम् उवाच महातेजा रामो राजऋषि सत्तमः किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे। तब महातेजस्वी राज शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। To him, the highly glorious Sri Rama, the foremost of royal sages, said, "What wrong have I done to you, O Bharata, that you will sit at my door to exert pressure on me, my darling brother?" ब्राह्मणो हि एकपार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हस्ति न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्य को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। A Brahmana alone ought to restrain people oppressing him by lying on one side at their door. Kshatriyas, however, who are or deserve to be sprinkled with holy water on the head when being installed as the head of a state, are not enjoined to sit at the door of anyone in this way. उत्तिष्ठ नरशार्दूल हि त्वैतत् दारुणं व्रतं पुरवर्यामितः क्षिप्रम् अयोध्यां याहि राघव। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। Get up, O tiger among men, giving up this terrible vow, return, O scion of Raghu, speedily to Ayodhya, the foremost of cities, from this place. आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किम आर्यं नानुशासत। ये सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। Gazing on all sides, Bharata, even while sitting, said to the citizens as well as to the people of the countryside, "Wherefore do you not plead with my elder brother?" ते तदोचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः काकुत्स्थम् अभिजानीमः सम्यक् वदति राघवः। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं कुकुत्स्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। The people of the city as well as of the countryside then replied as follows to Bharata, an exalted soul. We know full well that you, a scion of Raghu, speak aright to Sri Rama, a scion of the Kukustha. येषो अपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुम् अंजसा। परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए ये भी ठीक ही हैं। अतएव हम इन्हें सहसा
ओर से लौटने में असमर्थ हैं। This highly blessed Prince Sri Rama too sincerely abides by the command of his father. For this very reason, we are truly speaking not easily able to divert him from his purpose. तेषाम् आज्ञाय वचनं रामो वचनम् अब्रवीत् एवं निबोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षुषाम्। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सहृदयों के इस कथन को सुनो और समझो। Hearing their submission, Sri Rama addressed the following words to Bharata. Listen to the foregoing words of our friends who have their eyes fixed on what is right. एतत् चैवोभयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तदोदगम्। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरे और जल का स्पर्श करो। Nay, hearing both these utterances, mine as well as that of these people, weigh them fully, O Scion of Raghu, get you up, O mighty armed prince, and touch water in the order to sip it as well as myself, as an indication of your resolve to break the vow that you have just undertaken. अतोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम् अब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुः तथा। Getting up immediately and touching water, Bharata spoke as follows. Let all the members of this assembly hear me. Let the king's counselors too listen. न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्। I never begged sovereignty of my father, nor did I instruct my mother to do it on my behalf. Nor did I approve of this step of Sri Rama, a scion of the Raghu, which is that he should go into exile for 14 years. He knows best what is right. ये सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम में जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था, माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। यदि तु अवश्यं वक्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवस्यामि 14 वने समाः। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले में मैं ही 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। If the behest of our father must be carried out, and if one must live in the forest at all events, I myself shall do so for a period of 14 years. धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम्। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, विक्रीतम् आहितं क्रीतं यत् पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी है या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसमें मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। Fixing his gaze on the citizens of Ayodhya as well as on the people of the countryside, Sri Rama, whose mind is set on righteousness and who felt astonished at the sincere vow of his aforesaid brother, said, the sale, deposit, or purchase effected by our father while alive cannot be nullified either by me or even by Bharata. उपाधिर् न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तम् अयुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी
और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। No proxy should be sent by me into exile in the woods, for that would be a matter for reproach, since a proxy is allowed only in case the man replaced by him is unable to discharge the obligation imposed on him. The demand of Kaikeyi was but reasonable inasmuch as it was based firstly on the stipulation made by the king while marrying Kaikeyi that a son born to her alone would succeed him on the throne, and secondly on the debt the former owed to her for the invaluable service rendered by her on the field of battle. And only a virtuous act was done by our father in granting the boons asked by her. जानामि भरतं शान्तं गुरुसत्कारकारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्माओं में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। I know Bharata to be forgiving by nature and fond of paying respects to his elders. Indeed, all will be well with his high-souled prince once who is true to his promises. अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। 14 वर्ष की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। When returned from the forest, I shall indeed become the paramount ruler of the earth with this pious brother of mine. वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतं अनृतान् मोचय अनेन पितरं तं महीपतिम्। केकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधनों से मुक्त करो। As the king was solicited for a boon by Kaikeyi, his pledge given to her has been implemented by me by being in exile in the forest. Now acquit the said king, our father, of the charge of falsehood by ruling over Ayodhya, and thereby discharge your part of the obligation. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 111 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।